हाँ जी बच्चों, we are going to discuss the isometric projections. This we have already discussed in the last two classes. There are few cases which are left. There are few cases which are left. Our first lecture was based upon the lamina part. Then the second lecture was related to the solids object. Now we are going to discuss the more problem related to the solids part. In solid part, what happened? Basically, you might have seen this is the circle. We know how to draw the circle or a cylindrical object in isometric projections. Here, if you look at here, you might have seen the paperweight. Paperweight ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ. This radius is given to you R20. You might have seen the paperweight. Paperweight ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ. ਥੱਲੇ ਉਹ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਐਲਿਪਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਐਂਡ ਇਹਦੀਆਂ ਆਈਸੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਟੁਡੇ ਦਿਸ ਥਿੰਗ. Look at here, this is the dimension. Let us assume this is capital A. Whatever the dimension it is, मैं ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ 20, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕਰ ਲਿਆ, somewhere here it is 10. ਮੈਂ 10 mm ਥੱਲੇ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ horizontal ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, how to draw it in isometric projection. Look at here. Once it is the isometric projection, multiply A with 0.8. A with 0.8, you will get a isometric dimension, maybe small a, numeric value. This angle is given to you, it means XY line. This is a 30 degree. Sorry, this is 30. This is also 30. Is it okay so far? Can you measure this small a on this one? Similarly, can you measure small a here? ਤੁਹਾਡੀਆਂ small a plot ਹੋ ਗਈਆਂ. We have measured small a 0.8 multiply करके. Similarly, you know how to shift isometric and non-isometric lines. Now, by making use of the four center method, by making use of the four center method, you will locate the four center. This is the center C1, this is the center C2, this is the center C3, this is the center C4. Is it okay so far? Smaller circle C1, taking this an arc, draw an arc. You will get this. This is C1R. Similarly, you will get C2R. This is C2R. Similarly, C3R. It is on opposite sides, C3R. And C4R, it is on opposite side. This is C4R. I think this is the ellipse which you will get here. Now what to do? Now, you know, basically this is the value which we are drawn. Now from here, you know the radius. Multiply with 0.8. When you are multiplying with 0.8, you will find the value here. This radius is 20 and this value will be 16. This value will be 16. Why 16? Why 16? Because 20 with 0.8, you will get the value 16. We have located the center. Let us use this is the center O. This is the center O. Now taking O as a center equals to radius equal. What is the equal? You will draw a circle. You will draw a circle having radius R20. So basically, you will have a shape like this one. You have a paperweight like shape like this one. And again I am explaining. This part, जिन्ना या A नु 0.8 ना multiply कर लो, and we'll make this rhombus.
On rhombus you make use of a 4 center method. ਤੁਹਾਡੇ 4 center ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਬਣ ਗਏ, and once you have located from this center to the this 16 mm, means why? Because the actual radius is 16, multiply with 0.8 you will get a, and when you are going to draw it, क्योंकि बॉल तुसी किसी भी व्यू तो देख लो, it will look like a ball, that is why we are taking the actual radius. So this is the part 1 of the problem. मैं ड्रॉ कर देना, आह वाला पार्ट साडा प्रॉब्लम दा बन गया। पेपर वेट की प्रॉब्लम इस तरह की होएगी, विल गेट है पेपर वेट लाइक दिस वन। आई टेक वन मोर प्रॉब्लम, एक मेरे को जिहड़ा है सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, आई एम हैविंग अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, मैं उहदी 3 वैल्यूज ले लेना। आई एम टेकिंग अ सिलेंड्रिकल ब्लॉक, दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज गिवन टू यू, यू हैव टू ड्रा द आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल ब्लॉक ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਸ ਆ ਕਿਊਬ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿਊਬ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪਲੇਸ ਔਨ ਅ ਸਿਲੈਂਡਰਿਕਲ ਬਲੌਕ। ਕਿਊਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਪਿਰਾਮਿਡ। Basically here are 3 objects which are being placed in this one. So far whatever we have discussed, this is though we have taken maximum two objects, here we are taking 3 objects, cylindrical block, then cube, then pyramid। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਰਾ ਕਰਨਾ? Now ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, again you will take xy line parallel to xy line, draw an angle of whatever the value given to you, angle 30 degree ਦਾ ਲਗਾ ਲੈਣਾ। this is 30 degree, this is also 30 degree, clear? now cylindrical block है जिस ਦਾ diameter ਤੁਹਾਨੂੰ 60 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, height ਜਿਹੜੀ ਹੈ 20 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, height is 20 mm, diameter is 60, height is 20। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ the values आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ 0.8 ना मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 48 समवेयर हेयर तो कुछ इस तरह का करके यू विल गेट अ शेप लाइक दिस वन। इज इट ओके सो फार? सो इनू ध्यान नाल देखो, बाय मेकिंग यूज ऑफ द 4 सेंटर मैथड, बाय मेकिंग यूज ऑफ द 4 सेंटर मैथड, तो 4 सेंटर नाल इनू की बना लियो, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ले ले, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट 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 परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो सेंटर आ गया C1 C2 C3 C4। you know how to draw it, that has already been explained couple of times। A वाली radius opposite side, I mention it, and this one is drawn from this side, this one will be drawn from this side, clear? so साडा ब्लॉक है, हुण सानू हाइट दित्ती हुई है, maybe this is 20, this is given to you is 20, again we will draw a line parallel to this one, again xy line लगानी है लगा लो, थोड़ा easy हो जाएगा, you will get a shape like this one, here it is, clear? so far is it okay? ਤੁਹਾਡਾ सिलेंड्रिकल ब्लॉक आ गया जिस दी मैनू हाइट इत्थे तक दित्ती हुई है, maybe this is 20, this is given to you is 20, center to center this height is given to you। now clear? now again you will take the perpendicular bisect, diagonals join कर ले, perpendicular bisect, again we'll draw a 4 center method, रेडियस लगा ले C1 C2 C3 C4, सेंटर लगा ले, इत्थे तक मैं टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, आई ड्रॉन अ टेंजेंट हियर, टच करदा इनू जाए, सिमिलरली आई हैव ड्रॉन अ टेंजेंट हियर, मेरा सिलेंड्रिकल ब्लॉक बन गया, लेट अस दिस वन अप टू दिस वन, जिथे तक मैं डार्क करना दिस वन क्लियर? हुण इहदे उपर साडी क्यूब प्लेस है, अद्धी वैल्यू थल्ले आएगी, मे बी दिस क्यूब इज प्लेस्ड हियर पैरेलल टू दिस वन, लाइन लगा ली फ्रॉम हियर, अगेन दिस पॉइंट इज हियर, दिस क्यूब इज प्लेस्ड हैविंग न्यूमेरिक वैल्यू मे बी 30, साइड इहदी 30 दित्ती हुई है, दिस साइड इज 30, क्यूब की साइड है 30 mm, लेट अस अज्यूम। नाउ ऑन दिस साडा की प्लेस आ, ध्यान नाल देखो, इत्थे तक मेरी क्यूब प्लेस होगी, नाउ दिस इज द 1
darken one. क्लियर। हुण क्यूब के उपर मेरा पिरामिड प्लेस आ, स्केयर पिरामिड, पिरामिड भी स्केयर पिरामिड जिसकी साइड है मे बी 15 mm, लेट अस अज्यूम द साइड इज 15 mm, उन्होंने मैं ड्रॉ कर ला समवेयर हेयर कितने 15 होएगी एंड दिस इज विल बी 15, क्लियर। सो हाइट इज गिवन, लेट अस अज्यूम हाइट इज 30 mm, height is 30 mm, this is also given, height is 30 mm. From here the height is given 30 mm. Now here square pyramid, I have completed the square pyramid. Now from here this is the old point, this one, this one, एक डार्क आ जाना, पीछे वाला डॉटेड आ जाना, similarly this one is also dotted and you will have a square pyramid like this one. So ये दो ऑब्जेक्ट्स ਜਿਹੜੇ ਨੇ मैं ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, मेरा एक सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, आ वाला भी डार्क आएगा, दिस विल बी आल्सो डार्कर वन, दिस विल बी द डार्कन वन अप टू हियर, दिस विल बी द डार्कन वन अप टू हियर, लुक एट हियर, this one is darken one. So actually किया a square block and this is dotted, this is dotted, square block is not cylindrical block on which a cube is placed, on cube a square pyramid is placed. So here there are three objects which are placed, all are related to the solid one. This is the problem. Second problem, we take one more problem, let us assume we take one more problem. So that's it, we will do the next problem in the next session. Thank you very much.